पाकिस्तानी स्टार्टअप्स आमतौर पर अपने आप को एक बैनुल-अक़वामी सतह पर बनवाने में नाकाम रहे हैं। ना तो इनमें से बेशतर यूनिकॉर्न का स्टेटस हासिल कर पाते हैं और ना ही बाकी मुल्कों में अपना एक नाम बना पाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक पाकिस्तानी फाउंडर ने ना सिर्फ एक ग्लोबल एडटेक जायंट की बुनियाद रखी, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज को को-फाउंड किया जिन्होंने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये हैं उस्मान राशिद, मशहूर वेबसाइट और ऐप चेग के को-फाउंडर। इस्लामाबाद के मशहूर ज़माना सरकारी कॉलेज ICB से अपनी इंटरमीडिएट तालीम मुकम्मल करने के बाद उस्मान राशिद ने बैचलर्स के लिए यूनाइटेड स्टेट्स का इंतखाब किया। उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी कहाँ से शुरू हुई, आइए उन्हीं से जानते हैं। आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ इस्लामाबाद। मैं यहाँ से 1989 में आई डिड FSC फ्रॉम ICB एंड आई सो फ्रॉम देयर आई हैड गॉन टू द US एंड आई वेंट टू मिनेसोटा। 89 में there's no such thing as the internet, so you really couldn't tell how cold it gets over there. Minnesota is one of the coldest places in the US. So वहाँ पे I went as you said for my undergraduate. And during my undergraduate, you go through in the US a lot of learning about आपके interest क्या हैं, आपने क्या चीज़ें करनी हैं. So as I was going through engineering, I loved the engineering part of it, but I wanted to get more on the business side. So that's when I began to discover that instead of being a pure techie, I wanted to be on the business side of a tech company. And so that's where the transition began. And right out of college, I joined a startup in Minnesota. And the CEO of the company had no business giving me the job. But in the interview, I convinced him that, I'll work hard and we'll figure something out. And he gave me an opportunity. He said, look, I have a new product which I'm about to bring to market. And I don't have anyone to work on it, so let's give you a shot, right? So, and I took the opportunity, I jumped on it, and I was there for 6 years. And in the end, that product that I helped launch became the whole company itself. Everything else was shut down. It became so successful. So that company eventually got acquired by a South African company, but I learned a lot over there on hustle and how much work you have to do yourself to make it through. So lots of lessons I learned over there, and it was quite a journey, but very interesting times. So the idea शुरू में जो चेक करता है was about a Craigslist for colleges. Craigslist वहाँ पे एक होता है, it's a online service जिसमें you can buy and sell. But instead of having a college student 19-year-old meeting some random person in a city, we said, okay, why don't we have students buy and sell from each other? So हमने इसको 1-2 कैंपस पे लॉन्च किया. It was always targeted at the college market, and it began to take off. But उसमें 1-2 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हमने डिस्कवर किए. एक तो आपको जो बिजनेस होता है should grow month over month. इसमें होता है कि आपके सेमेस्टर के स्टार्ट में ट्रैफिक आता है, सेमेस्टर के एंड पे ट्रैफिक आता है, बीच में खामोशी. It's not good for business. हमने कोशिश की बीच में एडवर्टाइजिंग करें, ये करें, वो करें. What we realized was that that model was, while it would work, it would take a long time to go from there. So the plan A जो हमारा था वो actually failed हुआ. Kids buying and selling from each other, and they loved it. But the challenge, as I said, was it was not a sustainable business model because kids want to sell everything for free. So there's no transaction fee उसके अंदर. So वहाँ से then we said, all right, this model is not working out. But we looked inside Craigslist का हमारा model. उसको check post कहते थे शुरू में. The company was check post. And we found out 80% of the traffic was about buying and selling used textbooks. उस पे I remembered the pain that we had to go through when we were college students कि वो आपको university would sell you $125 textbook. At the end of the semester, they would buy it back from you for $50 and sell it again for $100. And used to upset us कि भैया हम भी पैसे बना रहे हो, why not give it to us for $100? And then we realized कि यार ये मॉडल तो ख़राब हो गया कि जो हमारे ज़माने में 90s के अंदर जो बुक $125 की थी, that was now $250. There were quite a few intersections happening in technology at the same time because आपकी जो कंपनी एस्टैब्लिश होती है वो काफ़ी चीज़ों से होती है. हमने कहा यार why not rent textbook, क्योंकि एक स्टूडेंट ने 10 हफ्ते इस्तेमाल करनी है, फिर बुक किताब फारिग हो जाती है, ठीक है ना. और एक किताब आपकी 3 सेमेस्टर चलती है, तो हमने कहा हम इसको बार बार रेंट करके उसको प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, ठीक है ना. एंड उस वक्त नेटफ्लिक्स वाज टेकिंग ऑफ. नेटफ्लिक्स ने हमें उस वक्त सिखा दिया था, वी टॉक अबाउट 2006, कि you could rent a physical DVD, you can ship it to your house, you can use it and send the physical product back
to Netflix. हमने वो कहा कि हमने that's a model we should have. And उसकी basis पे then we built the model. और हमारे चेक पोस्ट के मॉडल में से we had $1.5 million left. ठीक है, तो हमने उसको इस्तेमाल किया और उसकी एक बड़ी incredible जर्नी बनी टू द पॉइंट कि यू आर आस्किंग कि आपने फिर पैसे कैसे रेज किए. That we raised another $300 million over the next 3 months. So the next 3 years. हमारी वैल्यूएशन जब सीरीज हमने बी की थी हमारी it was 20 million. सीरीज बी पे हमने मॉडल चेंज करना शुरू किया. फिर हमने सीरीज सी की at 65 million. सीरीज डी पे हमने की 700 million पे in a matter of 9 months, which was unheard of at that point. And चेक की एक और ख़ास बात है कि to that point no one had invested into education industry. तो हमारे पास कोर्सेरा की फंडिंग हुई, हमारे पास और बहुत सारी हमारे पास यूडेमी की फंडिंग हुई, because we made education sexy. We showed people you can make a lot of money in it. And Chegg was almost they were the lead for Silicon Valley that you can safely invest in education and make money from it. गो के एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पैसे रेस किस तरह करने हैं और अपने बिजनेस को किस तरह बढ़ाना है. उस्मान राशिद के मुताबिक ये मालूम होना भी उतनी ही अहमियत का हामिल है कि किस वक्त आपके बिजनेस को आपकी ज़रूरत नहीं रही. So it's really important कि उसके अंदर you should know, entrepreneurs should know about themselves. Ben Horowitz has this really good blog जिसमें वो 2 टाइप के CEO आइडेंटिफाई करता है. There's a wartime CEO and there's a peacetime CEO. Wartime CEO are the ones who build things, वो at the startup phase वो मॉडल फिगर आउट करते हैं, वो उसको स्केल करते हैं. और एक आपका CEO होता है जो उसको फिर आगे लेके चलता है and at a certain rate, because आपकी इनोवेशन बड़ी कम हो जाती है. I realized very early on that I was just not excited to have 10-11 CEOs reporting to me. At this point, Chegg was 700 people. ठीक है? I just didn't enjoy having CEOs, all the VPs reporting to me, and I felt that as there would be somebody else who would love this job, who would really enjoy it. And you have to be fair to your investors. You have to be fair to your employees. Because मेरा अपना जो गेज था भाई, मैं उस VP को हायर करूँगा जो really जॉब चाहता है, right? मैंने कहा मेरा CEO की वही होना चाहिए जो really इस कंपनी का CEO होना चाहता है. So you have to be very honest with yourself, and that's where many entrepreneurs fail because they sometimes hang on for too long. And I hired the chief operating officer of Yahoo. He was also the CEO of Guitar Hero. We hired really top-notch people. We had the CTO of PayPal who had joined the company, the VP of customer service from Netflix. These are the people we hired to come work at Chegg, the best of the best. And then we gave them a CEO who was wonderful and who wanted to be there to lead it forward. And that's when I stepped off. And I also wanted to move on to the next thing, which was in the digital space. And I wanted to go from the physical to the digital space and actually build products very much focused on that. बहुतों के लिए इतनी कामयाबी शायद उनके सफ़र का इख्तिताम होती, उनकी काम करने की लगन ख़त्म हो जाती, लेकिन अपने आप को वॉर टाइम CEOs की सफ़ में खड़ा करने वाले उस्मान राशिद की ये सिर्फ शुरुआत थी. चेक के बाद उन्होंने ई-लर्निंग इंडस्ट्री में कदम रखा और वहाँ पर भी वो अपने वक्त से आगे थे. नो के नाम से एक कंपनी कायम की जो डिजिटल लर्निंग डिवाइसेस का बिजनेस बढ़ाना चाहती थी. याद रहे कि इस वक्त तक iPad भी लॉन्च नहीं हुआ था. जब कंपनी के बिजनेस को मार्केट ने थ्रेट किया तो उस्मान राशिद और उनके साथियों ने ना सिर्फ अपने आप को नुकसान से बचाया बल्कि कामयाबी से ये कंपनी इंटेल को बेच दी. So the idea was, आपको as you know, by that time iPhones were taking off like crazy, and these backpacks are always so heavy, बच्चों के इतने भारी होते हैं, and then you have a hard time, you can't really bring all your knowledge with you. हमारा प्लान था कि आपकी सारी टेक्स्ट बुक्स, आपके सारे नोट्स, आपकी सारी रिसर्च आपके एक टैबलेट पे आ गई है. उसमें आप you can flip pages in the book, you can annotate in the book, you can take your notes, everything on it. And so we were at the end, it was really ahead of its time. उस वक्त iPad भी अनाउंस नहीं हुआ था. एंड आपका जो स्टार्टअप जर्नी होती है उसमें द बिगेस्ट चैलेंज वाज कि हमारे प्रोडक्ट लॉन्च होने से एक हफ्ते पहले iPad रिलीज हुआ. एंड दैट्स व्हेन became the biggest challenge for investors कि भाई when Steve Jobs entered the market, everyone just scatters off. And that's when we decided to sell the hardware business, right? And we became a software company. And we still had our applications and everything. But we gave up the hardware, which was a very painful experience. Hardware is very, आप उसको हाथ में बनाते हैं. There's a deep passion for it.
and but we sold it off because it was the right thing to do at that point. All the software that we had built for the tablets, anything to run the whole thing, the whole platform, was now moved onto iPad and Android and everything else. So quite a few patents went along with it. Intel took it to China and Turkey, and they made it a product to take to the education sector across the world. इसके अलावा उस्मान राशिद की शुरू की हुई कंपनीज ना सिर्फ एजुकेशनल गेम डेवलपमेंट पर काम करती हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही साइंटिफिक करिकुलम के ऊपर बेस्ड स्टेम स्कूल भी चलाती हैं। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर भी कदम रखा है और वो इस कारोबार को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। एक सिलिकॉन वैली फाउंडर होने के साथ साथ आज के दौर में उस्मान राशिद एक मंजे हुए इन्वेस्टर भी हैं। मौजूदा माशी बुरान में पाकिस्तान और पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स के लिए उनका पैगाम और उम्मीद मोहतात मगर मुस्बत है। उस्मान राशिद के मुताबिक अगर बदलती टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ने अडॉप्ट ना किया तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। Pakistan, if you take a look at it, how many gun shootings happen in the US in a city compared to Pakistan? If you do the numbers, you'll be shocked that Pakistan is way down the list. हमारे स्कूल में कितनी shootings होती हैं? It's almost unheard of. ठीक है? When you compare these numbers, आप देखेंगे कि Pakistan is a pretty safe place. Pakistan has a marketing problem. Pakistan has a branding problem. And I've been telling the government Pakistan needs a chief marketing officer जिसने पाकिस्तान की good news को बाहर लेके जाना है. So we've just become defensive. हमें छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें सॉल्व करनी, राइट? हमारा एज अ कंट्री इफ वी फोकस विद इन कि भाई लेट्स फिक्स सम ऑफ दीज थिंग्स जो कि ऑब्वियस हैं. आपको पता है इन स्कर्डू एयरपोर्ट व्हेन यू लैंड आपका इट्स ब्यूटीफुल, पर आप उसके बाथरूम में जाते हैं आपको कहते हैं ओह माय गॉड हाउ डू आई गो इन देयर. वो सिर्फ 10 लाख का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट? इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम टू सॉल्व और आपका यू विल रिमूव अ पेन पॉइंट फॉर योर टूरिस्ट. तो एज ए नेशन हमने इन चीज़ों पे अगर फोकस करेंगे देन एंड स्टॉप बीइंग डिफेंसिव विल बी टोटली फाइन. एंड आपको पता है कि व्हेन यू पॉजिटिव अदर पीपल आर अट्रैक्टेड टू यू. और यहाँ की विद 250 मिलियन विद द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हमने द ओनली वे इज अप हमारे लिए. सो इफ वी फोकस नॉट सेल्फ एंड इन्वेस्ट यहाँ पे अदर्स आर गोइंग टू जंप इन. हमने उनका वेट नहीं करना. वी कीप वेटिंग फॉर एवरीवन टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. वी गॉट टू सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम्स. दैट्स द वे इट हैज टू बी. I believe sky is the limit. Absolutely, sky is the limit. Because if you look at all the neighboring countries and if you look at other areas, Pakistan is the one which is set to take off. ठीक है? Yes, we have infrastructure issues. Yes, we have some problems. But you almost have to put blinders on and not worry about the macro level. Because एक चीज़ मैंने देखी है कि if you take care of your own stuff, good things begin to happen to you. अगर आप कहेंगे जी उसने ये नहीं किया था, उसने ये नहीं किया था और मार्केट स्टॉक मार्केट नीचे चली गई तो मैं पैसे कैसे रेज करूंगा? कोई ताल्लुक नहीं. चेक when in 2008 financial crisis, I was in New York City raising money for our Series D. The entire financial market was collapsing around us. This is when the whole mortgage crisis occurred. We had $1 billion worth of term sheets on the table in front of us. Why? Because we were doing really, really well. Very focused. I could easily say यार मॉल खराब है यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, forget it. But we were so focused on building our product that it didn't matter आपकी macroeconomic situation क्या है, right? You can get through. And yes, there are challenges कि भाई आपके investors सोचते हैं आने से पहले, but you can then उसमें पता है क्या होता है, you can build companies which can get to revenue faster. आपने फिर वो तरीका निकाला, right? You have to entrepreneur का क्या काम है? उसने तो solution निकालना है प्रॉब्लम का. If your problem is I love the thing I'm building, but मेरी मार्केट में ये सिचुएशन है, solve that problem. आपकी मार्केट ऊपर नीचे होती हैं. There people are being laid off in the US, right? So it impacts on the startup scene, right? So there could be things going on, but a company that's doing great, there are Pakistani companies who are investing. Right? आपको होता है कि जी आपने क्या इंटरनेशनल फंडिंग जाकर मेरी वैल्यूएशन इंक्रीज हो, आई कैन डू एन IPO. डोंट थिंक अबाउट द IPO, डोंट थिंक अबाउट एग्जिट. हम एग्जिट का बहुत जल्दी सोचना शुरू कर देते हैं. कीप ऑन बिल्डिंग अ बिग कंपनी, कीप ऑन बिल्डिंग द कंपनी ओवर हियर एंड दोज डोर्स विल ओपन इवेंचुअली. AI is going to absolutely disrupt everything, and by the way that's a great opportunity for Pakistan. Some of the countries like Philippines जिनमें मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, राइट?
उनको दे विल गेट फ्लिप्ड आउट, उनकी बहुत चेंज आएगी, इंडिया में बहुत चेंज आएगी. This is a leapfrog opportunity for Pakistan if we embrace it. You think of it as a national security threat. The example I want to leave you with इसके जब हमने कंप्यूटर एज मिस की, तो ये आप समझे कि हमने एक साइकिल मिस कर दी, चलो जा रही है बात, राइट. हमने जब इंटरनेट मिस किया तो आपने एक मोटरसाइकिल मिस कर दी. Missing this AI age is like missing a rocket. You're never going to catch up with this. Which is why, as a country, for our government, it has to be at a national security level. This is how important it has to be, because Pakistan can leapfrog other countries जो कि जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है. आपके जब इनकम्बेंट होते हैं आपको बड़ा टाइम लगता है चेंज करने में. That's why startups come and disrupt big companies. Pakistan can be a startup in the AI space to disrupt the regional companies and say, we've got this. And they can completely do this, and it's not that difficult. It just takes from the top down. You make policies, you clear the way, and you get out of the way to do it.